विद्यादायिनी माँ शारदा निकटरे भक्तिपूत प्रणति जनाई जगतर मंगल कामना करी तुम को नहीं जाऊँगी आज इंग्लिश क्लास। Today's class is the first piece of prose of our textbook, that is a letter to God. Dear children, from the very beginning I should make it clear that we have already discussed two chapters from grammar, agreement of a verb with the subject. The second one is preposition, and we have already covered the second piece of prose, that is At the High School by M.K. Gandhi, and also we have discussed A Tiger in the House. And today we are going to discuss our first prose. Its name is A Letter to God. Here we see the photograph of G.L. Fuentes, the writer of the famous story A Letter to God. Okay. G.L. Fuentes, Gregorio Lopez Fuentes. Gregorio Lopez Fuentes. Okay. Gregorio Lopez Fuentes was born in the year 1895. Okay. He was born in the year 1895 and was passed away in the year 1966. Mr. Fuentes was a Mexican novelist, a poet, a journalist. Gregorio Lopez Fuentes is not only a story writer but also a great novelist, a poet, a journalist. He belonged to Mexico, a Mexican writer. Fuentes started writing at the age of 15. That means at your age, he started writing. Okay? When the Mexican Revolution began. During his time, when he was at the age of 15, the Mexican Revolution began. Many of his books related to the civil conflict. That means the Mexican Revolution. Mexican Revolution रा जो सिविल कन्फ्लिक्ट चलता तंकर अधिकांश पुस्तक यही सिविल कन्फ्लिक्ट माने यही द्वंद्वटा प्रतिफलित होता. His stories are exciting and humorous. Many of his works are concerned with the oppression of Americans. America मानक जो अत्याचार. Many of his works are concerned with the oppression of Americans. He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. Okay, in the year 1935, he was awarded with the National Prize of Arts and Science. Okay, the National Prize of Arts and Science in the year 1935. Now tell me, who is the writer of the story? Definitely Gregorio Lopez Fuentes. When was he born? Yes, in the year 1895. Which country did he belong? No doubt, Mexico. Okay, he started writing at the age of 15. Okay, now we have to turn to our story. The famous story in many of the school syllabuses, mainly of class 10 syllabuses. The syllabus committee members like to take such a piece, A Letter to God. Yes, my dear children, the name A Letter to God is really amusing, really exciting. Whatever may be the what may be the subject matter of the story, but it is addressed to God. The letter is addressed to God. That we have never thought how to write a letter to God, how to send a letter to God. Okay? Let's turn to our story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Okay? The house. From the very beginning, the writer started the story.
that from a house. He tried to describe a house. The house, the only one in the entire valley. पूरा संपूर्ण उपत्यकार एकमात्र घर. The only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. Okay, sat on the crest of a low hill. Low hill, yes, its one highest part is crest. Crest means the topmost part, the highest part of a hill. Hello? From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. Okay? From that height, if you go to that house, from that house, one could easily see the river. पहले ऊपर ऊपर जेते जीवा तल जिनस भल देखा से हाइट नदी देखा आउ कौन देखा एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न around the house there was the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. है भल फसल होइकरी अच्छी यही कथा ही से जमी कहूला. The only thing the earth needed was a downpour or at least a heavy shower. What was the only thing the earth needed? Yes, it was a downpour. असराय वर्षा, a downpour or at least a heavy shower. Okay, टिके हेगला खाली हेगला आउ किछि दरकार नहीं फसल होइकरी अच्छी. Okay. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay. Here comes onto the stage the hero of the story, Lencho. Okay. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, Lencho, the farmer, he knew his fields intimately, अति अंतरंग भाव में सी तार जमी गुड़ा को जाने कौटी पानी दरकार कौटी पोक लगिला कौन करिया पड़ो कौटी घास उठला. हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली हैड डन नथिंग. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग. ताल से करथला कोन ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. एका लय रे से चाहि रहितला कोठी की उत्तर पूर्व दिग को हला जोटा को आमे ईशान्य कोण कहूचे north east. Okay, now try to answer. Yes, Lencho was a what? Lencho was a farmer. Good. R-M-E-R. Okay, sorry. Lencho was a farmer. Okay, Lencho was a farmer. Lencho's house was on the top of a low hill. Okay, Lencho's house was on the dash of a low hill. Definitely on the top of a low hill. But what is the meaning of the word crest? What do you mean by? Yes, the highest part of a hill, the topmost part of a hill. Okay, the topmost part of a hill. Okay, like crest. Crest means the topmost part of a hill. The field of ripe corn was dotted with what? Yes, the field of ripe corn was dotted with flowers. Okay, the field of ripe corn was dotted with flowers. Okay, what is the meaning of the phrase dotted with? Tell me. Yes, dotted with पूरा छिन्न विच्छिन्न हो चारिआडे जोटा हला चारिआडे छिन्न विच्छिन्न होइकरे जोटा पड़ी थाए धर आमे कहूचे कागज पत्र उड़ीकरे चारिआडे बिछुड़ेकी पड़िछि गछरु पत्र उड़ी पड़ीकि चारिआडे बिछुड़ेकी पड़िछि से जिनसटा हला dotted with means scattered over an area. Okay, dotted लिखा है scattered. Scattered over an area. Okay, dotted with scattered over an area. The field of ripe corn was promising
a dash. Okay, promising a, yes, good harvest. Promising a good harvest. Good. The only thing the earth needed was a dash. Yes. What should we write here? Was a, what is that? The only thing the earth needed was a downpour. Yes. Was a downpour, or at least what? A heavy shower. Heavy लिखा है जी. At least a heavy shower. Okay. Downpour, or at least a heavy shower. Who knew his face intimately? Oh, yes, Lencho. Lencho knew his face intimately. Throughout the morning, Lencho had done nothing else but see the sky towards what? Which direction? Yes, northeast. Okay. Lencho had done nothing else but see the sky towards northeast. Okay, let's turn to the second paragraph. Now we are really going to get some water, woman. Oh, woman, Lencho addressed his wife as woman. Yes. Now we are really going to get some water. Hello? Now we are really going to get some water. हमें वे निहाती किसी वर्षा मिली जीवा. The woman was preparing supper. What was the woman doing? She was preparing supper. Lencho's wife was preparing supper. Replied, yes, God willing. How? ईश्वर को इच्छा ला. Yes, God willing. सही समय पिले. The older boys were working in the field. बड़ा बड़ा पिला माने they were working in the field, while the smaller ones were playing near the house. टिके टिके छुआ बड़ा को they were playing near the house until the old man called to them all, come for dinner. Oh, my dear children, come for dinner. Hala, asa khaibo. Come for dinner. Yes, it was during the meal that just as Lencho had predicted. Lencho जेमिति predict करथला, जेमिति foretell करथला, भविष्यवाणी करथला. Big drops of rain began to fall. बड़ा बड़ा वर्कुलिया ठुपा. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. hala, माटी तो आसिला कलाहांडिया. Huge mountains of clouds. पहाड़ पर्वत नेग्री वर्षा बादल पूरा गुडे तुडे गिरी आसिला. hala, सत्य जेमती पहाड़ पर्वत आकार. The air was fresh and sweet. जेमती वर्षा आसी जाए पिले से भला समय थिला. The air was fresh and sweet. The old man went out for no other reason. खाई बसी था लोकोटा. hala, Lencho. Sorry, the man went out for no other reason. The man went out. कोउती पाई गला for no other reason. अन्य किसी भी कारण थिला. Than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Than to have the pleasure of feeling the rain on his body. hala, Lencho went out for no other reason but to have the pleasure of feeling the rain on his body. बरकोलिया ठपागुड़ा बहुत दिन लगा शरीर पड़ीनी. कृषक पुଅ से कृषक hala, केमिति लागुची खाइबा छाड़ दे दौड़ी पड़ेला पदाकू. hala, to feel the pleasure of rain on his body. And when he returned, ଯେତେବେଳେ फेरिला, he exclaimed, कौन फैला? These are not raindrops falling from the sky. अरे हे, एगुड़ा raindrop नुहे रे. They are new coins. पैसा तो गदाउची हो. पूरा पैसा गदाउची. They are new coins. hala? The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. hala? बड़ा बड़ा ठोपा गुड़ा को hala? 10 cent pieces. hala? 10 मुद्रा and the little ones are 5. ये सब 500 मुद्रा लिखा. Okay? Cent means 100. Okay? Try to answer. What is the meaning of the verb predict? कही दीजिए. Foretell? Yes. Foretell the future. Foretell the future. Okay.
फोरटेल द फ्यूचर भविष्यवाणी करवा प्रेडिक्ट फोरटेल द फ्यूचर ओके now we are really going to get some water woman who is the speaker here tell me who is the speaker Lencho's wife not at all निजे लेंचो कही प्रश्न बुझा अर्थ स्पीकर किए लेंचो who is the woman here next question who is the woman here yes Lencho's wife Lencho's wife okay Lencho's wife who is the woman here the woman is described here is Lencho's wife was Lencho's family big or small was Lencho's family big or small was it a big family or small family the older boys were working in the field the smaller ones were playing near the house what does this line say yes definitely it is a big family okay what was the woman preparing yes boys in supper the woman was preparing supper yes God willing who said this yes Lencho's wife okay yes what were the older boys doing the older boys were yes working in the field short answer working in the field okay the older boys were working in the field what were the smaller boys doing yes playing near the house they were playing near the house पहले आंसर गुड़ाक आम जो करते गोटे गोटे फ्रेज करते दे वर प्लेइंग नियर द हाउस ओके ये पूर्ण वाक्य नहीं कि फुलस्टॉप की दरकार नहीं हु कॉल्ड देम ऑल फॉर डिनर हु कॉल्ड कथा लिखिए यस देयर मदर बा लेंचोज वाइफ Lencho's wife, okay? Lencho's wife, but their mother called them all for dinner. The children's mother. What began to fall during the meal? Yes, big drops of rain. Big drops of rain. Okay? Big drops of rain began to fall during the meal. In which direction huge mountains of clouds could be seen approaching? Yes, in the northeast. Okay. In the northeast. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and dash. Yes, fresh and sweet. Who went out for pleasure of falling the rain on his body? Who went out? Lencho himself. Okay. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. Who said this? Yes, Lencho. Okay. Lencho compared the big drops of rain to dash and pieces. Yes, big drops, 10 cent pieces. अच्छा, small drops, yes, 5 cent pieces. Okay, let's turn to our next paragraph. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in the curtain of rain. Yes, with a satisfied expression. ओके तमर फसल अमल होकर ही अच्छी विथ साटिस्फाइड एक्सप्रेशन से कौन विवेचना कला हि रिगार्डेड द फील्ड मैंने पूरा संतुष्ट पूरा अच्छी हि रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन वर्षार जो ठोपा गुड़ा पिला पड़ी सत्य जमी गोटे
କ'ଣ ଚଦର ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା, ପରଦା ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କଭର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଡ୍ରେପ୍ଡ ମିନ୍ସ କଭର୍ଡ, କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ହେଲା, ବର୍ଷା ରୂପକ ପରଦା କଭର କରିଦେଇଛି, ଡ୍ରେପ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ତାକୁ ବିବେଚନା କରୁଛି। ବଟ୍ ସଡେନଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ, ଏଇଠି ପିଲେ ଷ୍ଟୋରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବଟ୍ ସଡେନଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ, ଓକେ, and along with the rain very large hailstones began to fall, very large hailstones, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର, very large hailstones began to fall। ଓ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ରେ ପିଲେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆପଥର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେଖାଯାଉ ଗପ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଦିଜ୍ ଟ୍ରୁଲି, ଟ୍ରୁଲି ବନାନଟା ପିଲେ ଦେଖ, ଦିଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଡିଡ୍ ରିଜେମ୍ବଲ୍ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ, ଏଇ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ା ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ସିଲଭର କଏନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। जो पिला गुड़ाक द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन है रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। पिले पल्स आम जाने मुक्ता, फ्रोजन पल्स माने कालुआ लगुवा मुक्ता मैंने कुआ पथर गुड़ाक, ये पिला गुड़ाक से कौन कले वर्षा भितर धाई जाकि वर्षार एक्सपोज होकर बर्तमान कौन कर दे ट्राए टू कलेक्ट है गोटे कौन फ्रोजन पल्स, दैट मीन्स हियर हेलस्टोन्स, ओके। The field of ripe corn was draped in a curtain of a dash. What? Curtain of a rain. Okay. What was the meaning of the verb drape? What? Drape means? Drape means cover. Yes. Cover. The hailstones truly did resemble new dash coins. What? Yes. Said new silver coins. Okay. The boys ran out to collect the frozen. Yes, boy answer करो. Collect the frozen pulse. Yes. Collect the frozen pulse. It's really getting bad now. बड़ा हाँ किसी आउ भलो जाना पड़ने पिले किसी आउ बाग लगुनी हला। It's really getting bad now. भारी खराब हेलानी खराब आड़ू गति करुची। Explain the man हला। आउ किसी कहीं बाग लगुनी हला। ओहो आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप इट पासेस क्विकली। एटा शीघ्र शीघ्र कामना करछि कोन शीघ्र शीघ्र ए कुआ पथर चल जाऊ हला। इट डिडंट पास क्विकली पिले, इट डिडंट पास क्विकली। ए चटापट से कोन कुआ पथर गलानी बा झड तूफान सहित कुआ पथर जोटा चटापट गलानी। फॉर एन आवर पिले मन रखा को, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली है सारा उपत्यकार पूरा भर्ती करदेला कुआ पथर है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली है। ओके। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट है। ये जमी तार ता जमी एते देखाउतला कोन, द फील्ड वाज वाइट इतने हलदिया माने देखाउतला धला है एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, सती जमती कि लुण मिची देछि कि है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, हू सेड दिस? यस लेंचो। ओके। हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन? हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन हबो, रेन कि देबो। ओके। How long did the hell rain? Yes, for an hour. फिर कहला for okay for an hour. The field was white as if covered with what? Snow? No, salt. As if covered with salt. Okay. Not a leaf remained on the trees. Not a leaf, गछ गुड़ाक गोटे सबू थुंटा पूरा। Not a leaf remained on the trees, कोठी गोटा पत्र भी नहीं रखिलानी। The corn was totally destroyed. Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed. शस्य पूरा संपूर्ण भाव में totally destroyed. The flowers were gone from the plants. फूल भी मध्य चली गला। Lencho's soul was filled with sadness. कृषक सी बिले
तार माटी सहित संपर्क धारा निबिड़ हु न्यू हिज फील्स इंटिमेटली से लेंचो लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस हला पूरा दुख रे तार हृदय आज द्रवीभूत हो गला व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड समय आसला घंटाए परे व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड स्टॉर्म चली गला ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड बिचरा कृषक जनक ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड से तार शस्य क्षेत्र मध्य भाग चली गला आ कर हिड़ उपर चाहिए एंड सेट हिज सन्स पिला गुड़ाक गुंडू बाछुरी छुआ गुड़ाक पछ घेरी है बिचरा लेंचो कही एवं प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस अरे हे जदि गोटा पंगपाल दल आसते ए प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस से भी खाई था मन इच्छा से भी हेल्ले किछिटा छाड़ी जाते ये मूल किसी भी रखिला नहीं है नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज है दिस ईयर है ए प्लेग ऑफ लोकर्स है पंगपाल दल इंसेक्ट्स विच फ्लाए इन बिग ग्रुप्स पूरा दल दल होकर आसती एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स पूरा फसल ध्वंस कर देके जाती पूरा द हेल हार्ड लेफ्ट नथिंग किसी भी छाड़लानी दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न आउ आमर किसी मिल ना वी विल हैव नो कॉर्न नॉट ए लीव रिमेन ऑन द ट्रीज यस कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड yes the corn was totally destroyed okay the flowers were gone from the yes trees Lencho's soul was filled with sadness yes Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed he stood in the middle of the field stood in the middle of the field. The hail had left. What? Left? Consent thala? Nothing. The hail had left nothing. That night was a sorrowful one. भारी दुखद राति पिले थिला ये तो आसिला छाड़ी गला हला घंटाए नाचिला तापर छाड़ी गला that night was a sorrowful one. All our work for nothing. All our work for nothing. हला सब आज इनभेन हो गला वृथा हो गला देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस कहीं भी नहीं यही निछाटिया भैली रे सॉलिटरी भैली रे कहीं भी नहीं देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस जी कि हमको साहाय्य करिवो वी विल गो हंग्री दिस ईयर हला ए वर्ष आम आ खाइबा को पाइबा नहीं वी विल गो हंग्री दिस ईयर बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस कि सही निछाटिया घरे सॉलिटरी घरे जो जेते लोक थिले हला समस्त हृदय रे in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope गोटे मात्र आशा थिला से आशाटी कौन एकमात्र आशा हेल्प फ्रॉम गॉड है ईश्वर ठारू सहयोग हेल्प फ्रॉम गॉड डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स टू बी टोटल लॉस मनुक मन बुझे चलते डोंट बी सो अपसेट एते भांगी पड़नी है एते ओरिड हुअनी एते डिस्टर्ब हुअनी डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स टू बी टोटल लॉस जदि सबकि चल जाइए सबकि चलीगला भाई लगुच तथापि एते अपसेट हुआ नहीं रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर रे खाद्य बिना कहीं मरती नहीं है जी जन्म देती से खाद्य देती से मो भाग्य खाद्य लिखिदे है रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर दैट्स व्हाई दे से है समस्त कहले कौन नो वन डाइज ऑफ हंगर दे से महापुरुष मैंने कही कौन नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट एमती खाली बिली बिली हेले है किए कहला वी विल गो हंग्री दिस ईयर किए कहला ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग आउ किए कहूँ देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस आउ किए कहूँ रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप केवल गोटे आशा ही से भाभी चलला आउ ताकू किछि थळकुळ देखागला नहीं हेल्प फ्रॉम गॉड है ईश्वर ठार सहयोग ओके गॉड हेल्प फ्रॉम गॉड गॉड हुज आईज आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड पिला दिने ताकू किए कहितला है आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग ईश्वर को आखि सब देखुची है इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कन्साइंस आमर जो कन्साइंस अवचेतन स्तर में सचेतनता स्तर में है इन आवर इनर सेन्स कन्साइंस है विवेक जहाँ आम कहूँ आन इनर सेन्स ऑफ राइट और रंग कन्साइंस है
तेणु आम जहाँ करुचे जहाँ भावुचे है जहाँ मु कही जहाँ मु करई जहाँ मु चिंतई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछन्ति प्रति क्षणे भक्त कवि मधुसूदन राव ओके पिले गॉड हुज आईज आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग सब देखी पारती इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कन्साइंस जहाँ जड़े व्यक्तिर भितर भितर होता है भावुचे पदा के जापर ना कि जहाँ भावुची कन्साइंस माने प्रकृत जिनसा आन इनर सेन्स ऑफ राइट और रंग है विवेक आम जोटा कहे ये सबू जापारती लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन कठिन परिश्रमी एन ऑक्स ऑफ ए मैन है जे कि बलद भाया खटे है हु कैन वर्क लाइक एन एनिमल ओके वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स है सी खाली पशु भाया से खटी जाने बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट इतने सत्व भी पशु भाया से खटे बट स्टिल देख पे स्टिल लगला पॉजिटिव सेंस रे स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट है लिखाटा केमी हुए लेखा पढ़ाटा ताकू जना थिला है बिल बाड़ी तार संपर्क किंतु साधारण लेखा पढ़ा जानी थिला द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक है ता परवर्ती रविवार दिन द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगान टू राइट ए लेटर है ही बिगान टू राइट ए लेटर से आरंभ कला गोटे चिठी लिखा आरंभ कला व्हिच ही हिमसेल्फ वुड क्यारी जब से निजे ही नहीं जाता माने नहीं जीव है टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल है ताकू निजे नहीं टाउन रे मेल रे पकेब है ओके इट वाज नथिंग दैन ए लेटर टू गॉड ये जो चिठी ये आउ कि नाला इट वाज नथिंग दैन ए लेटर टू गॉड है नथिंग दैन आर यूज आम करवा लैंग्वेज स्टडी रे अकॉर्डिंग टू लेंचो नो वन डाइज ऑफ यस व्हाट यस हंगर नो वन डाइज ऑफ हंगर Lencho's family had a single hope that was the help from what? Help from yes God. बोले गॉड पाई सब बेले कैपिटल जी लिखी आम बेले तो आम लिखि लिखा आसलु तुम बही रे पिले छोट भी लिखा होची है whose eyes can see everything definitely God's eyes है God's eyes can see everything. God can see everything, even what is deep in one's. Yes, conscience. Raghavan, CONSCIENCE. Okay, science कौन लगे दो conscience. An inner sense of a right and wrong. Okay, conscience है an inner sense of a राइट एंड रंग रोटा लिख लो टाइम चल जाओ लिख आन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रंग ओके an inner sense of a inner sense of right and wrong. Conscience an inner sense of a sorry कौन कर an inner sense of a right an inner sense of right and wrong. कंप्यूटर पर चलना करें ना यार लिखी लेंचो वाज एन डैश ऑफ ए मैन बट लेंचो वाज एन yes ox of a man. Lencho was an ox of a man. It means he could walk like an yes animal, an animal. He could walk like an animal. Lencho was an ox of a man. It means he could walk like an animal. Was Lencho literate or unilliterate? What? Was Lencho literate or unilliterate?
Yes, he was he was yes illiterate. ହେଲା। On which day did Lencho begin to write a letter to God? On which day? On Sunday, yes. On the following Sunday. ब्रैकेट लिखी दवा on the following Sunday. On the following Sunday, Lencho started to write a letter to God. At what time did Lencho begin to write a letter to God? Yes, at daybreak. At daybreak. On the following Sunday at daybreak, he started to write a letter to God. God, कौन लिखुची? God, he wrote. लिखी चलची. God, if you don't help me, my family and I would go hungry this year. तमें जदि हमको साहाय्य न करिबो, if you don't help me, my family and I would go hungry this year. ए वर्ष हम उपास रे मरिबो. I need 100 pesos. केते चाहूती मु? I need 100 pesos. मो पिले इटाला मेक्सिको भलिया लैटिन अमेरिका रो कोन करेंसी तंग पैसा गुडा को पेसोज हला लैटिन अमेरिकन करेंसी मु मात्र 100 पेसो चाहूची उथि पई इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन माउथरे बुणाबुणी करिवि इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स हला आउथरे फसल आसिया पर्यंत से पर्यंत मु मो परिवार चलिबो एवं बुणाबुणी करिया पई फसल चाष करिया पई आई नीड ओनली 100 pesos because the hailstorm, that means the hailstorm had totally destroyed my cornfield. Okay, तो लिखी चलती है वो तापरे he wrote to God on the envelope ऊपर कौन लिखिला to God put the letter inside and still troubled हला ता envelope भीतर लेटर पुरेला and still troubled माने कष्ट मष्ट करके गला कोठी की went to town गला at the post office he placed a stamp on the letter ऊपर से गोटे stamp postage stamp हला लगेला नले चिट्ठी जीवनी and dropped it into the mailbox से ता चिट्ठी को नेकी पके देला where did Lencho write the letter कोड लिखिला था घरे ना टाउन रे ना कोठी yes at his home. Okay, Lencho wrote the letter, wrote his first letter at his home. Second letter कथा हसीनी पिले परंतो. Who carried the letter to the town? Yes, Lencho himself. Where did Lencho place the letter? ने पकेला कोठी? Yes, into the mailbox. Okay. He placed the letter into the mailbox. Who was the letter addressed to? Answer there. Who was the letter addressed to? The letter was addressed to yes, God. Okay. Letter capital कर दवा. To God. The letter was addressed to God. How much money did Lencho beg? Did Lencho beg to God? केते पैसे मागितला? How much money did Lencho beg to God? Yes, 100 pesos. जेंते लिखियो नहीं, अखेर लिखियो. Yes, 100 pesos. Okay, why? In order to sow his field again and to live until the crop comes. Crop comes on until the crop would come. Past लिखे पड़ो, निज भाषा लिखे पड़ो. What did he write on the envelope? He wrote on the envelope कौन लिखला? To God. Okay. He wrote to God.
at the post office. What did he place on the letter? Stamp. Okay, a stamp, মানে postage stamp. At the post office, Lencho placed a stamp on the letter. Yes, one of the employees was a postman and also helped at the post office. ଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେ କ'ଣ ଥିଲା? who was a postman ଥିଲା and also helped at the post office. ତା କାମ ଯାହା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଯାହା କୁହାଉଥିଲା କରୁଥିଲା, ଚିଠି ସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ନେଉଥିଲା, ବାଣ୍ଟୁଥିଲା. went to his boss laughing. postman ର ବସ୍ କିଏ? ହେଡ୍ କିଏ? yes, postmaster. went to his boss laughing. ହସି ହସିକିରି ଗଲା, laughing heartily, and showed him the letter to God. ଲେଖିଲା କ'ଣ? କହ ଭାଇ ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଏ letter to God. ସେ କ'ଣ ଗପିକି ଗଲା? never in his career as a postman had he known that address. never in his career as a postman, ଗୋଟେ postman ହିସାବରେ ତା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା. never in his career as a postman had he known that address. the postmaster, a fat amiable fellow, ହେଲା postmaster ଜଣକ କେମିତିଆ? ମୋଟା ଏବଂ ଭାରି ମେଳାପି ମଣିଷ, amiable fellow, pleasant man, also broke out laughingly. ସେ ବି ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ. but almost immediately, sange sange, he turned serious, ହେଲା he turned serious and tapping the letter on his desk. desk ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା କାହାକୁ? tapping the letter on his desk, commented. କ'ଣ କହିଲେ? what faith? अरे कि विश्वास! what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲୋକର ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ହେଲେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ନା ଥାନ୍ତା କି? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. ମୋର ସେମିତିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଥାନ୍ତା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ହେଲା ସିଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖା ଲେଖି, ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମିନ୍ସ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସ with God, ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ. yes, who saw Lencho's letter to God first? କିଏ ଦେଖିଲା? the postmaster or postman? yes, the postman. okay, the postman saw Lencho's letter to God. who showed the letter to the postmaster? same, the postman. okay, who never in his career had he known that address. ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛି? ସେଇ କହିଛି କିଏ? ସେଇ postman. never in his career as a postman had he seen such an address. okay, ଆଚ୍ଛା ହଉ. who was friendly and pleasant person? amiable ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା. who was friendly and pleasant person? କିଏ? yes, the postmaster. ଏଠି ଲେଖିଲା ପାଖରେ. okay, the postmaster. the postmaster was a friendly and a pleasant person. who broke out laughingly? the postman or postmaster? देखो बगी देखो लिखा है सीधा के postmaster. the postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughingly. ହେଲା the postmaster. okay, where did the postmaster tap the letter? ଲେଖା ହେଇଛି ଟେବୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଡେସ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖିକିରି କୁହ, ବହି ଦେଖ. he tapped the letter on his desk. ହେଲା on his desk. okay, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. who said this? okay, the postmaster. okay, yes.
postmaster said this. Who started up a correspondence with God? Who? Yes, Lencho. Lencho started up a correspondence with God. Started directly, he had correspondence with God. Story क्या सिवा? So, in order not to shake the writer's faith in God, भांगी नदबा पाई नदबा उद्देश्य रे, in order not to shake the writer, shake माने हले दबा माने एटी भांगी दबा. In order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Postmaster मुंडू गुड idea आसिला, भाविला से answer the letter, answer दबा, दियो माने दबा, answer the letter. But when he opened it, पिले प्रश्न पड़ती के खोलिला? The postmaster opened it. But when he opened it, it was evident that स्पष्ट थिला, जल के देखाउतला जे to answer it, he needed something more. हला ताको अधिका किसी दरकार than goodwill, ink and paper. खाली इंक पेपर धरिक गुड़ाए शुभेच्छा नदी पकईले हेनी आधिका किसी दबाक भी पड़ो अधिकाटा कौन जानते तो आउ येस 100%. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन कि सी जो रिजोल्यूशन निष्पत्ति दृढ़ रहिले. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉय मान थे किसी मागिले. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी है निज सैलरी गोटे बड़ धर अंश टिके देले. And several friends of his were obliged. Friends of his है बहुत बंधु पे डबल पॉजिटिव लगी. Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. गोटे महत् काम है गोटे महत् उद्देश्य चैरिटेबल वर्क. ये उद्देश्य से समस्त किसी बाध्य करेला झड़ेला किए झड़ेले द पोस्टमैन. ओके It was impossible for him to gather together the 100 pesos. तांको पूरा पूरी काठी कर पड़ता. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. है 100 pesos जो कोटो कलेक्शन करेंगे है पे 100 pesos माने तो छोटियाटा बुझनी गोटे परिवार से चलिए नेक्स्ट क्रॉप आसला पर्यंत प्राय वर्षे. तेणु यहीटा को तुम छोटिया जिनस बोली भावनी है एवं बुणाबुणी करेंगे जमी चाष करेंगे. So he was able to send the farmer only a little more than half. अधारू अधिका टिके अधारू अधिका अवश्य एक्जाक्टली तुम पढ़ीगल जानी 70 pesos से पठेले है. He put the money in an envelope. मनी किसी एनभलप पुरेले के द पोस्टमास्टर इन an envelope addressed to Lencho. Lencho को लिखाई एड्रेस से पुरेले. And with it a letter. ता भीतर गोटे चिठी रहा. ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड आज ए सिग्नेचर गड. से जो लेटर थिला पिले गोटे सिंगल वर्ड थिला. कौन सा सिंगल वर्ड? आज ए सिग्नेचर है गड लिखा गोटे सिग्नेचर मरा होता. आउ बेसी किसी वर्णना करना. ओके हु ओपन लेंचोज लेटर किए कह पिले हु ओपन लेंचोज लेटर. यस द पोस्टमास्टर. Okay, the postmaster opened Lencho's letter. Postman आनी खाल दे दी. What did the postmaster require to answer Lencho's letter? But अरे इंक की पेपर गुडविल एगुड़ा तो दरकार है. बाद he needed money है money है he needed money along with money सहित आउ तुम जाको चुप लिखी दियो along with goodwill ink and paper है along with okay लिखी दबा. goodwill ink and paper. Okay. The postmaster required money along with goodwill, ink and paper. Let's attack in sir. Go to Chadi Periani. To try to stick to his resolution. Yes. The postmaster. निज निष्पत्ति दृढ़ रहा पोस्टमास्टर चेष्टा कले.
Okay. The postmaster tried to stick to his resolution. Yes. Who asked for money? Who asked? पैसा पत्र किए मागिला? Yes, the postmaster. Who did the postmaster ask for money? क्या मागी थी? To his employees and friends. तांकर जो कर्मचारी माने थिले, yes, to his employees and friends. To his employees and friends. What did the postmaster himself give? से कौन देले? से मान पैसा देते ना? He gave a part of his salary. Yes. He gave a part of his salary. Could the postmaster arrange the 100 pesos? Definitely no. Okay. Short लिख लिए. Okay. He couldn't arrange the 100 pesos. He arranged only a little more than the half. Actually, it was 70 pesos. परवर्ती पार्ट रे पढ़िबा. How much could he arrange? बर्तन आप जो डाक आम जानी सारे पढ़ी सारे जेहेतु लिखिदेवा 70 pesos. Okay. Where did he put the money? Yes, in an envelope. Anandako. Emti apanandako. Okay. He put the money in an envelope. Hello PE. Error marundi. That is error. He put the money in an envelope. What was the envelope added to? What was the envelope added to? Envelope address क्या लिखा added to Lencho. Okay. The envelope was added to Lencho. What did the envelope contain along with money? Yes, a letter. Letter कौन लिखा था? Containing only a signature as God. GNATURE signature. कौन से signature था? Signature God. Okay. A letter containing only a signature God. उद्योजना देते ले बेटर आओगे. Okay. The following Sunday, Lencho came a bit earlier. आउटी 16 से आसीगला. कोटी की टाउन को came a bit earlier than usual. Came a bit earlier than usual. सबुदिन से जमती आसे आपके 16 पळे आसला to ask if there was a letter for him. मैं पचारा कौन if there was a letter for him. भाई मोर किसी चिट्ठी पत्र थिला कि indirect speech लिखाई थी. It was the postman himself. Postman जे प्रथम पाई थिला. It was the postman himself who handed the letter to him. हला सही postman ताकू आनी बढ़ी देला कौन चिट्ठी को दे देला. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. हला ये जाने की चिट्ठीटा पढ़ाऊँगी. पोस्टमास्टर ता सीट्रे बसिकी दूर बसिकी से देखुचंती. पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग कौन एक्सपीरियंस नौचंती द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन से लोकर संतोष जे कि जीवन रे हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड गोटे महत् काम गोटे चैरिटेबल वर्क आज करिछि गोटे दरिद्र लोक को किसी संग्रह करिकरी देइछि हला लॉकडाउन फ्रॉम हिज ऑफिस रो बसिकी पोस्टमैन या आशा करूछि पोस्टमास्टर आशा करूचंती जे कोन से आत्मसंतोष आज लाभ करूचंती आत्मसंतोष को अनुभव करूचंती हला कि हेला कोन यस Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money.
जे पैसा को जो देखला लेंचोर टिके भी हेले नॉट लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज टिके भी आश्चर्य है नहीं ऑन सीइंग द मनी पैसा देखी आश्चर्य है सच वाज हिज कॉन्फिडेंस यही तला तार कॉन्फिडेंस है माने केते दृढ़ मनोबल जोड़ा कहती माने भरसा ईश्वर ऊपर है सच वाज हिज कॉन्फिडेंस सी तो कॉन्फिडेंस से क्या आश्चर्य हम तार जेतु कॉन्फिडेंस थिला है तेणु सी आश्चर्य है नहीं बट ही बिकेम एंग्री रागिला केते बेले व्हेन ही काउंटेड द मनी गणिकी रागिला कारण ये तो पूरा 100 पेसोस देना ना लिटिल मोर देन हाफ दे लिखले गॉड कुडंट हैव मेड ए मिस्टेक लेंचो कहूँ गॉड कुडंट हैव मेड ए मिस्टेक ईश्वर केवे भूल करें ये सब भूल मनीष करे गॉड कुडंट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड से लेंचो भाया गोटे लोक को केवे मना भी करें ना से भूल करें ना किसी के लेंचो भाया गोटे दरिद्र लोक जी मागी 100 पेसोस मात्र से केवे मना भी करें नहीं व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड यस व्हाट डिड लेंचो गो ऑन द फॉलोइंग संडे yes definitely to the town post office okay to the town post office okay who inquired at the post office if there is a letter for him who inquired definitely Lenzo who handed the letter to Lencho बढ़ेला किए पोस्टमैन ना पोस्टमास्टर यस द पोस्टमैन ओके who had performed an act of charity किए मौत काम करते यस द पोस्टमास्टर ओके द पोस्टमास्टर performed an act of charity. When the postman handed the letter to Lencho, what was the postmaster doing? He was experiencing his contentment. Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. The postmaster was experiencing the postmaster was experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. Okay. Okay. The postmaster was experiencing the contentment of a man. Okay. Contentment of a man who has performed a good deed. वो हार्ड रेडी कर दिया हाथ रखे रखियो है who had performed a good deed who showed not the slightest surprise on seeing the money definitely Lencho okay Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money this was his what confidence yes CONNCE okay this was his confidence पढ़ुची confidence faith belief all the above एमती कौन नहीं कौन पढ़ुची this was his confidence how did Lencho become angry sorry when did Lencho become angry कितने बजे के लिए yes when he counted the money when he counted the money okay he became angry what was Lencho's reaction when he counted the money he became angry he became angry okay who couldn't have made a mistake definitely the God God couldn't have
मेड ए मिस्टेक लास्ट पैराग्राफ बोधे आसीगला टाइम भी बहुत हो गलानी घंटाए होगलानी अधिका इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक लेंचो कौटी गला इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक कहला भाई टी कागज इंक मते मिलियो कि हला ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल रे बसिला ही स्टार्टेड टू राइट हला लेखिया को आरंभ कला विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो तर आखिर जो भ्रुलता हला इतने मात्रा टेंशन होता से जहाँ भावुए तो भाव गुड़ाक आखिर भ्रुलता जो कुंचन देकर प्रवाहित होता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज तार आइडिया गुड़ाक सी तार माने सी जो चेष्टा करता से तार मुहर जना पड़ता है व्हेन ही फिनिश्ड से सरला ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प पुणी गोटे स्टाम्प किणला व्हिच ही लेग्ड चाटिदेला जीभ लगेला जीभेर सीधा मारिदेला अठाड़े को है लेग्ड एंड देन अफेक्ट इट टू द एनवलप अफिक्स कला विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट माने हाँ जो हाथ आमर पापुलीर साइडटा है विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट पापुली बाड़ेदेला द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स है जो समय चिट्ठा जाए मेल बॉक्स रे पड़ला द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट पोस्टमास्टर निजे गले ओपन द सेकंड लेटर पोस्टमास्टर है इट सेड कौन लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर है मुझे मागी थी ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी मात्र 70 मुद्रा है मते मिली सेंड मी द रेस्ट है मत अवशिष्ट दयाकोरी टी पठातु सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल है केबे भी मेल रे पठेबनी जमा जहाँ कर एणिकी जी पठेब डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स है बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स है ये जो गोटे दले है दले ठक दले है ठक टी काटी बंच ऑफ क्रूक्स है ये सब माने नॉट सो गुड पर्सन्स है डिजनेस्ट पर्सन्स माने क्रूक्स है बंच ऑफ क्रूक्स माने पेंथाए कौन मनीष गुड़ा पेंथार गुंथी था ए ग्रुप ऑफ डिजनेस्ट पर्सन्स ओके ये एकाठी तेणु जहाँ कर जमारू पहले देख पोस्टमास्टर विवेचना को चिंता कर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैज परफॉर्म्ड एन एक्ट ऑफ चैरिटी ही हैज माने he was able to gather 70 pesos to offer to a needy person who had lost everything due to the hailstones but इतने कर सारा कौन मिलूँ देख तुम्हें है सांगे सांगे पे प्रशंसा मिले भल कम कर चल के पछुक अनैबनी मत समस्त प्रशंसा करूँ मत भल कहतु मत गोटे धन्यवाद दिंतु ये प्रकार आशा के रखियो ना गल्प लास्ट पारा एक कथा कौच पिले है पोस्टमास्टर भाई कौन बोधुए से लोकटा कह हे ईश्वर है हेल्प दैट मैन हु हैड ट्राइड टू हेल्प मी है यू हेल्प दैट मैन सी हूँ एमती भल कामना कर मोपाई ईश्वर निकट प्रार्थना कर कि मिलला कौन गाड़ी मिलला द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स पिले एमती ये हूँ क्षुद्र गल्प पिले आरंभ कही यहाँ गल्पटे या प्रबंध कहबानी पिले क्षुद्र गल्प पिले एमती तार लक्षण शेष हो पिले तुम भाव आउ तापर कौन है हूँ तो आउ कहीं कौन कला कि है हूँ तो पोस्टमास्टर से लेटरटा को लेकिन पोस्ट ऑफिस कर दे जाइए नर्दमा को फिंगी देते ताकू जड़े भद्र व्यक्ति पाइले हूँ तो सी चेष्टा कले एमती कौन ना कौन तुम भावी पार है किंतु क्षुद्र गल्प से गुड़ाक उत्तर के तुमको दिए ना तुम्हें तुम दिगरे तुम चिंता कर एक लक्ष्य कले किए विश्वकवि आमर रवीन्द्रनाथ ठाकुर तंकर वर्ष जापन कवितार बंगला कवि लिखिले कौन छोट प्राण छोट व्यथा छोट छोट दुख कथा नितांत ई सहज सरल क्षुद्र गल्पर के गुड़ाए कथा बना थाए छोट प्राणर छोट व्यथा है छोट छोट दुख कथा जोड़ा नीतिदिनिया जीवन में घटे को परिराइजर कहानी एथे न थाए है को वंश वर्णना एठे न थाए है को राजकुमार कथा एठी न थाए सहस्र विस्मृति राशि प्रत्यह जेते छे भासी तारी दुचारिटी अश्रुजल है बंग्य कवि कहले विश्वकवि जे
सबुदिनिया घटुवा गोटे प्रत्यह जेते भासी सहस्र विस्मृति राशि सबुड़ा घटे और भूली जाए एमती गोटे गोटे मुहूर्त थब टिके लुह टिके हस चेन्नाई हस जे कि जहाँ भूली पारिया ना तारी दु चारिटी अश्रुजल दी चारिटा अश्रुजल हो पारे गोटे मुहूर्तक भाव नाई पारे है नहीं वर्णनार छटा घटनार घन घटा इटी क्षुद्र गल्परे बिले सर्ट स्टोरी नहीं वर्णनार छटा केबे वर्णनार वर्णना राम रामंग पुओ लव रामंग बापा दशरथ तांको बापा अमक सी एमती सूर्य गड़ी आसी सी एमती रघुठू गड़ी आसी ये सब एत वर्णना ता देहरे न थाए है नहीं वर्णनार छटा घटनार घन घटा नहीं तत्व नहीं उपदेश ये गल्पर के उपदेश दिखाई न था पिले केवे गल्पिक कहना तुम के प्रशंसा लो आशा न रखी अन्य मान को साहाय्य कर चल जीवन में महत् काम कर चल प्रशंसा को अनाओ नहीं गाल्पिक केवे कहना जी पूरा दी हाथ टेकिक ईश्वर पाखे शरण पचाए ईश्वर तक साहाय्य करते एक कथा केवे गाल्पिक कहना गोटा पढ़िक आमे बुझुचे है नहीं तत्व नहीं उपदेश अंतरे लास्ट लाइन पिले अंतरे अतृप्ति रहे सांग करी मने हवे है मनटा खाली छटपट हुए कौन है लेंचो को आउ 30 पेसेज मिलला कि नहीं अंतरे अतृप्ति रहे सांग करी मने हवे शेष है शेष सीना हो गला हयल ना शेष है छोट प्राण छोट व्यथा छोट छोट दुख कथा नितांत सहज सरल मन पड़े कौन गपिले तो सहस्र विस्मृति राशि प्रत्यह जेते भासी तारी दु चारिटी अश्रुजल नहीं वर्णनार छटा घटनार घन घटा नहीं तत्व नहीं उपदेश अंतरे अतृप्ति रवे सांग करी मने हवे शेष है ना शेष पे जीवा सियाड़ को आम क्वेश्चन आंसर कौन टे रहा देखीदे वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो द पोस्ट ऑफिस टू आस्क फॉर कौन इंक एंड पेपर यस टू आस्क फॉर ink and paper okay to ask for ink and paper तापर भी जाइए कौन to buy a postage stamp where did he write the second letter on the public writing table yes public writing table How did he express his ideas while writing the second letter? Yes. With much wrinkling of his brow. Hala? जिनसटा with much wrinkling of his brow. ये जिनसटा लिखा पड़ियो. हाला? तार जो आखिर भूलता कथा कहता है तारा फोरहेड जोटा से कथा कहता है already express his ideas okay with much wrinkling of his brow he expressed his ideas while writing the second letter where did he buy the stamp at the window of the post office yes at the window of the post office. Okay. Where did he do? What did he do with the stamp? कौन कला? प्रथमे चाटिला, legged, then affected it with a blow of his fist. है ना? He legged it and affected it with the blow of his fist. Okay? With the blow of his fist. खसगला कि खस जाइए अब नहीं आस फोन टा आसीगला तो blow of his fist ये जिनसा से कला he legged it and then affected to the envelope with a blow of his fist. केमी कॉपी करती है गुरुजन शिख
कॉपी करी करी गुरुजी क्यारियर जाइए से बोला कौन गुरुजी हेले हेले होला ओके ठीक है कॉपी करिया भी ठीक आसुनी गुरुजी की कौन कह कह अच्छा हाँ केते लास्ट को सादा ओके सत गला हाउ डिड ही अफेक्ट द स्टाफ मैंने बोला ये कोड कुछ लगी से एका कथाटा ये आउे हाउ डिड ही अफेक्ट से केमिति अफेक्ट कला he legged and then affected to the envelope with a blow of his fist. Who opened the second letter? Second letter हो first letter हो किए खोलता था? Yes, the postmaster. Okay, the postmaster opened the first letter. He also opened the second letter. How much money did Lenzo get? कितने तक मिली थी यस 70 pesos only 70 pesos what was the rest amount definitely 30 pesos Lencho requested God not to send the money through the yes what through the mail okay why because the post office employees are a bunch of crooks होला because the post office employees are a bunch of crooks okay because the post office employees are a bunch of crooks okay and so requested God not to send the money through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Okay. What is the meaning of the word crooks? Yes, dishonest persons. Dishonest. Dishonest persons. Dishonest persons. Okay. What is the meaning of the phrase a bunch of crooks? Yes, a group of dishonest persons. A group of dishonest persons. Okay, a group of dishonest persons, bunch of crooks. What do you learn from the story? पिले एक क्वेश्चन टी तुम रखिली है तमें कौन शिखल मु तो गपी सारे गुड़ाए कथा तुम्हें कौन शिखल निज भाषा यहाँ पिले एक मार्किया नुहे यहाँ तुम मो आज एक्टिविटी तुम्हें को सुंदर भाव में डिजाइन कर गोटे पैराग्राफ लिख है पैराग्राफ लिखिक मो पाखक पठेब प्राय धरिक घंटाए 14 मिनिट तुम्हें शुणी आस पिले जहाँ भी हो खातार निहाती लिखब डोंट फॉरगेट टू राइट इट इन योर नोटबुक खातार लिखब खातार लिखि सारिक खातार फोटोकॉपी जी तुम लिखा कार्य दिखाई निहाती निहाती मो पाखक पठेब है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई ट्राई टू मेक ए वीडियो जस्ट विथ द हेल्प ऑफ टाइपिंग है टाइपिंग सिस्टम रे आज प्रथम वीडियो सो मेनी मेनी थैंक्स टू यू मे गॉड हेल्प यू and be safe, be healthy. This much for today. Okay.